Today we are having a very special guest. His name is Atul. He got recommended for CDS OTA and is going to join the OTA. So Atul, I welcome you on this platform of YouTube channel. Yeah, thanks for having me. Okay, so first of all, congrats Atul for your success in CDS OTA that you got recommended in your first Thank you, attempt. Yogesh. Thank you. So basically, can you tell us about how was your journey till today, starting from day one for the preparation of SSB and CDS written exam till today? So it was nothing like that that I started preparing for the defense exam all of a sudden. I've been a defense aspirant for many years, right from class 8. So I've given many exams, which includes RIMC, and which I didn't clear. After that, I gave NDA written for 5 times. So it was like I was a battle-hardened defense aspirant already. Just that I didn't went to the SSB, but I was struggling in the written examination part. So when my last NDA attempt was over, I knew one thing for sure, that I'm struggling in the written part. So I prepared for the CDS in all of my college years. So beginning from the first year, I was preparing for my CDS entry. So it made easy for me to crack the CDS exam in one go. And in this November of 2019, I cleared CDS for OTA, and I had my SSB in July 2020, in between the lockdown, which I cleared. So this is my journey till now, starting from the day I started to be a officer in defense forces. So, and you told us about that you have this journey that you started in class 8th, right? Yes. So, how you decided to join the armed forces? My father is in army. He is an OR, and he is in armored army services corps. So being a defense brat, I've been seeing the army very closely since my early days, and I've seen the officers in uniforms, the aura they carry, and the type of life they have. So one thing was clear in me, that I want to make my career in defense only, and that too being an officer. So so the first step towards being an officer was giving entrance for any Sainik school or military school or the RIMC. So the journey started like this. I missed my Sainik school exams in class 5th. So the next exam I had was RIMC. So this is the way the journey started off. Okay, and you told us one thing that you haven't cleared any NDA exam. You gave it for 5 times, Yeah. right? So, Yes. what was your mindset that time? Because as you told us that you are having this dream of joining the armed forces, coming Yes. from a defense background, then you are not able to clear the NDA exams, right? So, what was your Yes. mindset at that time, and what was the level of motivation you are having? Because multiple time failure, it needs a lot of courage and Yeah. basically that determination to control that failure and that to learn from that failure. Uh, After every written, I used to see that I didn't qualify it. So yeah, it did bring sorrow with me, that why I didn't clear the exam. It did bring sadness, but at the same time, it also brought the challenge that why I'm not able to clear the exam. Something is lacking, right? And in the next attempt, maybe I can tackle it. I can find it. I can work upon it, and I can clear it out. And maybe in the next written, I might clear it, and I might go to the SSB. So after every failed attempt, yeah, I used to be sad for the initial few days, but after that, I used to make a plan again, once again, that नहीं अभी फिर से exam देना है. No matter what happens, I'll give the exam once again. I'll show up in the examination center, and whatever happens, if if you have decided that you have to clear NDA, so you have to stick to the plan. You cannot just give up. कि एक बार written हुआ, you cannot back off. Okay, if you back off, it means that you are not at all interested in the first place. So I would say that never backing off वाला जो attitude था, it was embedded in me. Nowadays, like that everyone has a craze for joining the armed forces, but see, Yeah. they have to face failures also. Every time you cannot get Yes. the success. So what would be your guidance to the candidates who are having a multiple failures and still they are continuing, but there other hand on the other hand, there are some candidates who have a fear of failure. What would be your message Yeah. to them? The candidates who fail repetitively, I'd only say that if you're not interested deeply enough in a field, like here we are talking about defense examinations. If you are not at all thoroughly interested
interested in it, you'll give up in your first failure itself. But if we compare it to the person who is deeply interested and who will do or die to join the defense forces, will not give up. So not giving up after repetitive failures depend on to how much extent you are interested in joining the defense forces. If you are lightly interested, ekdam upar, so you're just doing it for fun, just because it is cool to join forces. So you'll give up in your initial failure. Okay, you'll think ki mujhse nahi ho raha, so I might give up. But if you're very thoroughly focused and it's your passion, right? Ki chahe kuch bhi ho jaye, doesn't matter how many times I fail, I'll join. So अगर इतना पीछे motivation factor जुड़ा हुआ है, so one can stick to the career. Okay, even if you fail repetitively, one will not lose the track. What was your approach for CDS exam? After seeing a Okay. lot of failures in NDA written exam, what was your approach for CDS exam? When my NDA attempts were over and my first CDS attempt was approaching, so I decided that I would not study for CDS. I would study for another exam which is way tougher than the CDS, and that is UPSC. So I started a full-fledged preparation of UPSC, CSE, Civil Services Examination. So one can, the one who is a CDS aspirant can easily relate that whatever the syllabus of CDS is, it is totally correlating with the UPSC CSE. So in the preparation of UPSC CSE, I cleared the CDS examination very swiftly. So only a thought process behind this would be I prepared for a tougher exam and managed to clear the easier one. Had I been preparing for the CDS itself, I doubt that I might have cleared it. So UPSC, it takes a lot of hard work. So studying for UPSC made the CDS entry easy for me. See, nowadays candidates have this thing that once they decided for preparation of CDS exam, one thing they do is that they join the academies, coaching institutes, and all. So, what is your advice to those candidates? Is it mandatory for going to coaching, or they can prepare for the exams on their own? See, one can prepare for the exams on their own very easily. But obviously, going to a coaching physically, there you'll obviously learn new things. But people suffer from the habit of spoon feeding. In the coaching, you can get fed up by a lot of knowledge, and you'll just sit over there and listen to what the teacher is speaking. And if you somehow fail to revise those lectures or study on your own, self study अगर आप नहीं करोगे, तो आपके कोचिंग जाने का उसका कोई फायदा नहीं है. तो इन दैट केस इफ यू नो वेरी वेल कि अगर मैं कोचिंग जाता हूँ और वहां पे मुझे सिर्फ बैठ के सुनने की आदत लग जाएगी, मैं घर पे आके पढ़ूंगा नहीं, तो इट इज बेटर दैट यू डोंट जॉइन अ कोचिंग. आप घर पे बैठिए और सारा सेल्फ स्टडी जो खुद करिए, बिकॉज व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन, एक बर्डन खुद के सर पे रहता है कि आई हैव टू फिनिश दिस सिलेबस. इफ यू गो टू द कोचिंग, द बर्डन इज ऑन द टीचर कि उनको सिलेबस खत्म करके देना है हमें. What are the books that you would suggest to a candidate if he or she has to prepare for the CDS written exam? This question has been asked by many aspirants to me. तो इसे मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, तो लेट्स स्पीक अबाउट अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 months एट मैक्स, जिनका कॉलेज खत्म हुआ और नेक्स्ट सीडीएस अटेम्प्ट आने वाला है 3 महीने के अंदर. सो देयर आर 3 पेपर्स, जीएस, इंग्लिश एंड मैथ्स. So for maths, they can buy R.S. Agarwal, Mathematics for CDS. And for GS, they can buy Lucent General Knowledge latest edition, that is 2020. And for English, they can buy Arihant ki SP Bakshi, English for competitive exams. So studying these 3 books thoroughly would easily enable anyone to crack the written examination. Also, there is one point I'd like to add to this is the book I told about GS, Lucent General Knowledge. One should read it minimum 2 to 3 times before going to the exam, because I feel GS में एक बार पढ़ा हुआ बिल्कुल काफी नहीं है. CDS का GS is getting tougher and tougher every day. So अगर आप Lucent में से पढ़ रहे हो तो आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपने जो भी पढ़ा है कंसाइज वाला वो आपको याद रहे एग्जाम में भी. तो ये तो हो गया अगर आपके पास टाइम स्पैन कम है. अगर आपके पास टाइम स्पैन बहुत ज्यादा है, तो यू कैन गो फॉर अ ब्रॉडर अप्रोच, जो यूपीएससी स्टूडेंट्स करते हैं जनरली. उससे क्या होगा, अगर आप एक बार भी पढ़ते हैं या फिर आप लाइटली भी पढ़ते हैं, तो आपने इतना सारा कंटेंट पढ़ा है तो पेपर क्लियर हो जाएगा. तो फॉर देन यू कैन ब्रेक डाउन द सिलेबस. तो लॉन्ग टर्म वाला आई टॉक फॉर प्रिपेयरिंग जीएस, you can approach to different sources.
For polity, you can buy standard UPSC books, Lakshmikant from history, you can do from modern history of India. And for science, I'd recommend Pathfinder. Aryan's Pathfinder ka science part is totally okay. One can finish all his science syllabus from over there. फिर GS में for current affairs, one can read newspapers और listen to FM radio. One thing is like FM radio को लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर ये करते हैं, बहुत underrated है, but अगर कोई रोज FM radio सुनता है तो उनका current affair 50% प्रिपेयर हो सकता है, इतना तो मुझे फील होता है, बिकॉज आई एम अ थरो लिसनर ऑफ FM रेडियो every morning. So current affair one can study from, one can gather information from FM radio, newspapers, news channels, and nowadays social media पे भी बहुत ज़्यादा we can keep ourselves updated with the social media. It comes to English, the same source, SP Pakshi's competitive English for English for competitive exams, and maths के लिए भी same RS Agarwal. सो लॉन्ग टर्म वाले प्लान में बस जीएस के सोर्सेस चेंज हो जाते हैं. दैट इज तुम पॉलिटी बड़े सोर्स से कर सकते हो, दैट इज लक्ष्मीकांत. हिस्ट्री भी बड़े सोर्स से कर सकते हो, और जो भी जीएस के अंदर जो सब सेक्शन है वो तुम एक ब्रॉडर सोर्स से कर सकते हो, लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बिकॉज यूपीएससी एंड सीडीएस का जो जीएस है वो काफी ज्यादा रिलेट होता है. So now tell us about your preparation for SSB. Did you take any coaching or did you prepare it on your own? सो एसएसबी के टाइम पे भी मेरा जो पूरा प्रिपरेशन था, इट हैड अ मिक्सचर ऑफ सोर्सेज. सो वन सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स वुड बी एक्सपीरियंस फ्रॉम द फ्रेंड्स, बिकॉज टू ऑफ माई बैचमेट्स, 12th बैचमेट्स आर ऑलरेडी इन इंडिया. Two of my seniors are also India pass outs. So their SSB experience and their guidance matters a lot. So वहाँ से I got a lot of information to start with. After that, for added information, I joined AFOSOP, that is a coaching in Pune. And from that coaching, a biggest takeaway would be I got very good in GTO. I did psychology there too, but I feel that the coaching का जो psychology में ये था रोल था, that was quite less. बाकी psychology I prepared on my own. And बचता है पर्सनल इंटरव्यू का, तो पर्सनल इंटरव्यू आई डोंट फील कि यू नीड टू गो टू कोचिंग और किसी और से आपको नॉलेज लेने की जरूरत है. पर्सनल इंटरव्यू इज ऑल अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, प्रिपेयर द क्वेश्चंस एंड हैव द करेज टू स्पीक इट वेरी नाइसली. So that's it. For psychology, what was your approach? Like how you prepared your mind and what are the things you do apart from preparing the written part, because you have to practice also. So is there any specific thing you do for the psychology? So अगर psychology की भी बात करते हैं तो we'll break it down in different parts. So first is WAT, then TAT, SRT and SGT. So in TAT we all know that we have to write stories. So okay, this was my mantra. This does not means कि बाकी लोग भी मेरा follow करे या फिर मेरे techniques उनके ऊपर काम कर सकती है. But I used to feel that the more I practice for psych test or the stories, the SRTs, the more I am tampering my originality. तो मैं जानबूझ के मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा TATs practice नहीं की थी. मैंने सिर्फ 10 से 12 TATs लिखी थी in my entire preparation before going to the SSB. Because I felt जितनी ज़्यादा मैं TATs अटेम्प्ट कर रहा था उतनी ज़्यादा मेरी ओरिजिनलिटी खत्म हो रही थी. मुझे मेरा माइंड एक ऑटो मोड पे जाता था जहाँ पे एक फेक रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते थे. तो आई वुड से कि while approaching TAT, so one must not practice a lot. ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड को आदत लगती जाएगी कि जैसी कोई फोटो दिखती है जल्दी से जल्दी अच्छा एक वंडरफुल रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करे. तो वो अगर आपको आदत लग गई तो आप एसएसबी में जाके भी एकदम आपका माइंड ऑटो मोड पे काम करने लग जाएगा. आपको फोटो देखेगी, आप ज्यादा सोचोगे नहीं. वहाँ पे जो आपको तुरंत सबसे अच्छी स्टोरी, जो एकदम बॉलीवुड टाइप स्टोरी जो आपको नजर आदत लग चुकी होगी, वो आप लिख दोगे. सो मेरा मंत्रा तो ये था फॉर टीएटी दैट यू डोंट प्रैक्टिस इट मच. बाकी अगर प्रैक्टिस मुझे कुछ करनी रहती थी तो मैं एवरीडे टास्क करते हुए सोचता था कि ओके, इफ आई एम वॉकिंग इन मार्केट विद माय मॉम, सो आई जस्ट सी द ग्लिम्स ऑफ द मार्केट, और मैं सोचूंगा कि इसमें दिस वाज टोल्ड मी बाय अ सीनियर दैट ट्राई टू राइट टीएटी स्टोरीज अपने आसपास देख के. So like I was saying, if I'm walking in a market with my mom and if I see the glimpse of the market around me, so I'll try to write a story out of it. How the street vendors are selling, how the fruit sellers are struggling in their life, how they are bringing the
fruits from the farm to the market and how they're selling. So everything, stray dogs and the cleanliness in the market, the people, everything. So आप टीएटी के लिए जरूरत नहीं है कि आपको लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप एक भी टीएटी करके नहीं जाओगे, आपको एटलीस्ट 10 टीएटी तो करनी चाहिए ताकि आपको राइटिंग स्पीड से लिखने की आदत हो जाए. Now coming to the WATs. So there are 60 WATs. So WAT is like finding a window. आपको अगर 60 पे से जब भी मौका मिलेगा to write a very nice response, write it. Otherwise, don't try too hard. I mean, this was my ideology कि अगर मुझे बहुत इजीली कोई मौका मिल रहा है to write a very nice, a perfect response, तभी मैं लिखता था. Otherwise, मैं बिल्कुल hard try नहीं करता था. So out of 60, I'd say that 25 responses were very good, informative, and natural responses too. And after that, I can say that 50 responses were lame, 15 responses were lame, और बचे हुए 20 were a mixture. So किसी भी इंसान को जरूरी नहीं है कि 60 के 60 responses अच्छे से लिखने की कोशिश करनी चाहिए. वो जितना ज्यादा कनिंग एटीट्यूड दिखाएगा कि नहीं मुझे ये वाला भी अगला वाला भी अच्छा लिखना ही है, he'll mess up the process. And now coming to the SRT. As far as I remember, I did 39 SRTs. और मेरी SRT जैसे गई थी, मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखी थी और उनको एक सेंटेंस में या फिर 2-3 वर्ड्स में एंड नहीं किया था. हर SRT मैंने 2 या 3 लाइन की लिखी थी. So summing up everything, TAT, don't practice too much, stay true to the life. And TAT कोशिश करना, WAT कोशिश करना कि अगर इजीली तुमसे अच्छा रिस्पॉन्स बन रहा है तो ही लिखिए, वरना हर वर्ड में कनिंग एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें भी अच्छा लिखूंगा और अगले वाले में भी अच्छा लिख दूंगा. एंड SRT, राइट गुड रिस्पॉन्सेज, राइट डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज. बस इफ आई गिव एग्जांपल, ठीक है, राम वाज गोइंग होम एंड ही सॉ स्नेक. सो उसके आगे मत लिख दीजिए कि ही टर्न्ड बैक एंड ही वेंट टू द अदर प्लेस. सो ये शो करता है कि हाउ इजीली यू स्किप द सिचुएशन. सो राइट अ डिस्क्रिप्टिव वन, 1, 2 या फिर 3 लाइन का भी हो सकता है. इस हरी में रहने की जरूरत नहीं है कि मुझे 60 की 60 SRT पूरी करनी है. एंड लास्टली कमिंग टू द SDT. तो ये SDT तो एक्चुअली में लास्ट में आता है, लेकिन SDT इन सब की शुरुआत है. So SDT में when you write about what your parents think about you, what you think about you, what your teacher think about you, what your friends think about you, and what type of a person you want to become in life. So इस सब के responses आप चाहे तो partially learn करके जा सकते हैं, और I feel कि अगर time बचाना है तो आप learn करके जाइए. और वहाँ पे भी आप बिल्कुल उसे जेन्युइन लिखिए, आप ऐसा लिखिए जो आप लाइफ में है, और वही रिस्पॉन्स, वो जो SDT के आंसर्स है उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करिए आपके TAT, WAT और SRT में. सो दिस इज द होल फंडा ऑफ साइक टेस्ट. SDT ठीक से लिखिए, जेन्युइनली लिखिए, और बाकी तीनों टेस्ट में SDT की ट्रूथनेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. सो द assessors would also know that there is a homogeneity between everything. One thing about the TAT, I mean, we use sometimes the candidate said that your approach should be for the real life events. If you have done something in your life, you should write that same thing in the TAT also. So have you done the same thing in your SSB? Yeah, to some extent I've done. Look, I can give you an example. So in my TAT there was a story. There was a picture where a few men were clearing rocks off a road. So hilly region में एक रोड था, वहां से रॉक साफ कर रहे थे कुछ लोग. तो ये मैंने इसमें लिखा कि विलेजर्स थे, एंड माय मेन कैरेक्टर प्रपोज्ड आइडिया दैट वी शुडंट वेट फॉर द गवर्नमेंट टू क्लियर अप आवर रोड्स, और हम वहाँ खुद जाके रोड साफ करेंगे. तो हालांकि ये रियल लाइफ में मैंने किया नहीं है, बट द टाइप ऑफ पर्सन आई एम, या फिर मेरी जो पर्सनैलिटी है, तो अगर मैं वहां पे होता तो मैं जरूर मेरे विलेजर्स को परसुएड करता टू गिव अ कम्युनल एफर्ट. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रियल लाइफ बोलते हैं तो हाँ ये चीज अगर आपने की है तभी लिख सकते हैं. आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि ये इवेंट अगर मेरे पास साथ होगा तो मैं क्या करूंगा इसमें. Okay, and what about WAT? I mean, there are a lot of words like home, and then there is a word like chair, and then there is a word like cycle. If you have to write something in TAT in these words, home, chair, and cycle, so first thing, what would you basically think about these words, and what would be your approach for these words? Okay, so एक ऐसा इंसान है जिसको SSB के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी एक बता सकता है आपको कि अगर आपने होम के ऊपर एक सेंटेंस लिख दिया कि आई लिव इन माई होम, तो
एक ऐसा इंसान है जिसको एसएसबी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी आपको बोल देगा कि यार ये तो बहुत बेसिक सेंटेंस है, ये तो एकदम सा बकवास सा सेंटेंस है। वैसे इसका ये भी मतलब नहीं कि आप ये सेंटेंस लिख नहीं सकते। अगर आपके पास उस वर्ड में टाइम नहीं था, यू कैन राइट इट, ओके, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज, देयर आर सम रिस्पॉन्सेज जो आपको पता होते हैं कि ये अच्छे है और ये अच्छा नहीं है, ये आपको खुद को पता होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, होम आपको दिख गया, सो यू आर राइटिंग आई लिव इन माई होम। सो आपको, आप खुद से पूछिए मैं सेटिस्फाइड हूँ क्या इस आंसर से? नो। अगर नहीं है तो ट्राई करिए कि मैं इसे और कैसे अच्छा बना सकता हूँ। और अगर यू फील कि नहीं ये मेरे नॉलेज बेस को, मेरे आईक्यू को मैच कर रहा है, मैं इतना ही लिख सकता हूँ, तो इट्स ओके। सो व्हेनेवर यू राइट अ रिस्पॉन्स फॉर WAT, आप खुद से एक सवाल पूछिए कि ये जो तुमने किया है वो सही किया है क्या? सो जैसे अगर मैं अपना बोलता हूँ, कोरिलेटिंग इट विद माई आईक्यू, अगर मेरे को एक रिस्पॉन्स, मेरे को एक वर्ड आता है होम, एंड इफ आई राइट आई लिव इन माई होम, सो ये मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा ये है। तो आई ट्राई टू मॉडिफाई इट, और मॉडिफाई भी मैं तभी करूंगा अगर ये सही में पॉसिबल है, अगर टाइम है तो। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है तो मैं इसको छूंगा नहीं। लाइक आई सेड, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट इन एवरी वर्ड। सो if a word comes home, so I'll try to write that pakka houses are more durable than kacha houses, or any other modification. ये तभी मैं लिखूंगा अगर मेरे पास वो इट इज पॉसिबल, टाइम है। अगर नहीं है तो सबसे इजी जो है ये आई लिव इन माई होम, दैट्स इट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपको कब मौका मिलता है अपने सेंटेंस को सबसे बेस्ट लिखने का। ट्राई टू फाइंड दैट विंडो, आपको जैसे टाइम मिले और वो सेंटेंस है और वो आपके क्लिक हो दिमाग में, जस्ट राइट इट। About SRTs, so I mean there are a lot of SRTs which comes in SSB, and you might have been seeing those SRTs for the first time. I mean, you haven't experienced those kind of SRTs in your real life. So what Yeah, would be surely. your approach to those, and what would be the best possible way to write a? I mean, there is no right or wrong answer, but what would be the best Yeah, possible way to write a SRT? yeah. Like you said, there is nothing like a right or a wrong answer, but we can always find a middle ground. Okay, so अगर आपके पास एक SRT आती है कि there are few gunmen or one single gunman that has entered a coach, ठीक है, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोच में आ गया और वो गन पॉइंट कर रहा है, तो a very heroic बॉलीवुड वाला रिएक्शन वुड बी कि मैं जाके उसे I'll fight him, okay, I'll snatch his gun and point it backwards, और फिर मैं उसी को ये करूंगा। और एक एकदम लेम आंसर ये होगा कि I'll hide under the seat, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, ओके। आप इतना ज्यादा भी रिस्क नहीं ले रहे कि आप अपने और बाकी पैसेंजर्स की भी जान खतरे में डाल दें, और आप इतने भी कावर्ड नहीं है कि आप चुप के बैठ जाएंगे। तो ट्राई टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड कि मैंने अपने फेलो पैसेंजर्स की हेल्प ली और साथ में मिलके उस बंदे के ऊपर जंप किया, एंड वी ट्राई टू टेक हिज गन अवे। आफ्टर दैट उसको न्यूट्रलाइज किया। सो वन कैन ऑलवेज ट्राई टू सीक दैट मिडिल ग्राउंड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एकदम बढ़िया लिखे या फिर एकदम बकवास लिखे। सो वंस यू नो, आपको जैसे जैसे आदत लगे कि हर रिस्पॉन्स में मैं एक मिक्सचर है किसका, पॉसिबल इवेंट्स का भी और रियलिटी का भी, तो दैट इन माय ओपिनियन दैट इज द राइट आंसर फॉर SRTs. How you should prepare for SD? What are the things you will Okay. do, and what would be the approach for that? SDT के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि आप जितना रियलिटी को स्टिक करके रहेंगे, आप जैसे वैसा उसके अंदर लिखिए, बिकॉज ये जो TAT WAT SRT ये जो टेस्ट है, ये बहुत अच्छे से इंजीनियर्ड है। ये आपकी ट्रू सेल्फ को बाहर निकाल के रहेंगे, तो आपका ट्रू सेल्फ तो साइकोलॉजिस्ट के सामने वैसे भी बाहर आ ही जाने वाला है। तो आप SDT में नकली चीजें लिख के कोई कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो बेटर ऑप्शन वुड भी SDT में भी सच लिखिए, स्टोरी से सच तो वैसे भी बाहर आने वाला है। सो SDT में आप भी ट्राई टू बी ऑनेस्ट, बट इतना भी ब्लंटली ऑनेस्ट नहीं दैट आई हैव जीरो स्टैमिना और आई एम टोटली कावर्ड, यू नो। डू राइट योर फ्लॉज टू, बट यू कांट बी सो ब्लंट दैट स्ट्रेट अवे किसी को देखते ही आपके ऊपर से ये चला जाएगा। If we divided all the GTO in different tasks that we are having, so what would be the approach of a person for every task that we are having in GTO? So the coaching where I went, the mentor over there told me that the crux of GTO lies in first four tasks, that is group discussion, GPE,
lecture it, and PGT. If you fail to project a good image of yours in these 4 tasks to the GTO, तो आप इसके बाद कुछ भी ट्राई करिए, आपका GTO फेल्स इन अ वे, आपका GTO फेल हो जाएगा. सो मेरा मतलब एक जो आउटलुक था GTO के टुवर्ड्स यही था कि मुझे इन 4 टास्क में बहुत अच्छे से ऑप्टिमम परफॉर्म करना है, और जब इस सब का इसमें अच्छे से परफॉर्म करने के बाद एक टोन सेट हो जाएगी GTO में, तो मैं बाकी के टास्क में भी अच्छा परफॉर्म करूंगा. बट घर से निकलते वक्त या फिर GTO शुरू करते वक्त तो मेरे दिमाग में यही था कि फर्स्ट 4 टास्क डू इट वेरी नाइसली. अगर तुमने ये नहीं किया तो यू विल फेल इन GTO. So first 4 tasks would be lecture it, group discussion, GP, PGT, and lecture it. This was the order it was taken. So for group discussion, it is very easy. Need not be told कि आपको आपका knowledge base बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, ग्रुप में एक्टिवली बोलना पड़ेगा, बाकियों को भी बोलने का मौका देना पड़ेगा. अगर आर्ग्यूमेंट भी करना है तो पोलाइटली एकदम आर्ग्यूमेंट आप अपना प्रेजेंट कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट GPE, GP में योर इफेक्टिव इंटेलिजेंस शुड प्ले. ठीक है, कौन से रिसोर्सेस हैं उनको प्रायोरिटाइज करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और कैसे खुद के नीड्स को भी पूरा करना है. एंड ऑल्सो इन GPE आपका ग्रुप इंटरेक्शन स्किल्स बहुत हाई होना चाहिए, बिकॉज GPE में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं, तो उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और एक टाइम फ्रेम के बाद एक कंपलसरी होता है कि यू हैव टू प्रोजेक्ट आइडिया, फाइनल स्टोरी. तो वहां पे आप लड़ाई करते नहीं बैठ सकते अपने GTO वालों GTA ग्रुप के साथ. And it comes to PGT. So I'd say कि crux of GTO lies in PGT. One who is not doing good in PGT, at least for me, I don't feel कि GTO में कहीं और भी अच्छा करके कोई फायदा नहीं, because PGT है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने को मिलती है, वो भी फिजिकली ग्राउंड के ऊपर. तो PGT में ऐसा जब आपके GTO आपको पूरा ग्राउंड दिखाता है, ऑब्स्टिकल्स दिखाता है, स्टार्ट नोटिसिंग इट. आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को देखिए और देखिए कि कैसे ब्रिजेस बन सकते हैं, तुरंत एनालाइज करिए. आपने पूरे लाइफ में जितना दिमाग यूज नहीं किया उतना PGT में करिए, बिकॉज PGT डिमांड्स इट. आप द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ योर ब्रेन PGT में आपका यूज होने वाला है. सो एंड देन इट कम्स टू लेक्चर इट. अगेन फॉर लेक्चर इट नॉलेज बेस बहुत हाई होना चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग. लेक्चर इट इज जस्ट लाइक पब्लिक स्पीकिंग, बस पब्लिक बहुत कम ही होती है GTO आपके जितने ग्रुप है. So lecture it में minimal amount of body movements and tone आपकी एकदम humble and polite होनी चाहिए. Speaking में you have to be very loud and audible, and also the clarity of thought should be very high. And इसके बाद जो भी GTO के छोटे छोटे टास्क बचते हैं, हाफ ग्रुप टास्क हो गया, या फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हो गया, या नेक्स्ट डे पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए, फिर फुल ग्रुप टास्क हो गया. ये इफ यू डूइंग द फर्स्ट 4 टास्क वेरी नाइसली, आप ये भी कर सकते हैं. लाइक इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन बचता नहीं है. अगर आप केपेबल है पहले 4 टास्क करने के, बचे हुए 4 टास्क भी आप कर सकते हैं. बट फिर भी फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर व्यूअर्स आई टेल यू कि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में वन शुड बी वेरी एंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक. आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होनी चाहिए कि मैं अपने GTO ग्रुप के साथ कुछ तो एक ऑब्स्टिकल क्लियर कर रहा हूँ. So be cheerful. आप जोर से जोश में हाई रहिए, और group obstacle race is nothing but just about your जोश. And half group task is overlapping with the PGT. So I guess half group task में ज़्यादा explanation demand नहीं करता, but still half group task के पीछे का जो idea होता है, I'll explain that. So with the help of half group task, जो अपनी leadership या फिर जो अपने ideas PGT में शो नहीं कर पाए थे, उनको एक चांस मिलता है फिर से अपना लीडरशिप हो गया या फिर अपने आइडियाज हो गए वो HGT में प्रोजेक्ट करने का. तो अगर आप PGT में थोड़ा बहुत लैक कर रहे थे कहीं पे, तो आप HGT में उसे थोड़ा ओवरकम कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट डे पे फिर नेक्स्ट डे पे ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जो है, सो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में इट इज वेरी एविडेंट दैट यू शुडंट बी वेरी एक्सट्रीमली ओवरवेट. SSB जाते वक्त आपको वेट अपना कम कर लेना चाहिए, तभी आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को ऑप्टिमम लेवल पे कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत ओवरवेट है तो जो ऑब्स्टिकल्स कर ही नहीं सकता, ही कैन डू. बट अगर कोई लीन ह्यूमन है तो वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है. तो यू बी अटेंटिव. आपको ग्रुप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कैसे करने के लिए बताया गया है, आप वो करिए. एंड फिर फाइनल ग्रुप टास्क इज ऑल्सो सिमिलर टू द PGT, बस उसमें आपका पूरा ग्रुप टास्क ग्रुप इन्वॉल्व होगा.
One thing about GTO, like in PGT and SGT and in command task also. So if you are not having any idea Yeah. at that time, so what would be your approach? I mean, what are the things that a person should do if he is not getting any idea in that PGT or FGT task? Command task is also one of the very important things. Uh, command task. So if in command task you're the commander, right? So it is expected from you कि आपको idea आना ही चाहिए. You are saying कि अगर किसी को idea नहीं आता, so sorry for being blunt, but मैं यहाँ अपने सारे viewers को और सारे SSB aspirants को कहना चाहूँगा कि नहीं आ रहा, ये आपके मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए कि मुझे आइडिया नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? आना ही चाहिए. So इट इज लाइक डू और डाई. आइडिया आना ही चाहिए. आप अपना दिमाग, आपका एक एक ब्रेन सेल यूज करिए. आप सोचिए कि मेरा हेल्पिंग मटेरियल्स क्या है, मुझे कैसे ब्रिज बनाना है. आना ही चाहिए. नो इजंट एक्सेप्टेड, एटलीस्ट इन द जीटीओ पार्ट, एनीवेयर. ठीक है, चाहे पीजीटी हो, एचजीटी हो या कमांड टास्क हो, आइडिया आ नहीं रहा तो थिंक ओवर इट. आप अपने लास्ट ब्रेन सेल को फोर्स करिए आपके हेल्पिंग मटेरियल को देखकर और ऑब्स्टेकल को देखकर सोचने के लिए, लेकिन सोचते रहिए. आइडिया नहीं आ रहा shouldn't be on your tongue. Now discuss about the interview part also. I mean, what was your preparation for interview, and how you worked on your communication skills? Is there any another thing that you worked on for interview? So for interview, I did practice some basic questions. जो questionnaire होता है वो मैं practice करता था. अपना introduction हो गया, basic introduction हो गया, फिर education मैंने कहाँ से किया है, what games I've played and what are the hobbies I do, what are the extracurricular activity I do, मेरा friend circle क्या है and how do I spend time with them. तो ये सारे general questions के answer मैं घर पे एक chair पे बैठ के in empty room practice करता था. Apart from that, in the actual interview, I'll say that what I observed the most is the interviewing officer was observing my body language and the way of answering. He was interested in my answer, of course, but more than that, he was interested in the way मैं answers अपने बता रहा था, and how my legs were shaking at that time. He was observing me from my head to toe. So I'll say that आपके इंटरव्यू में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो सबका आंसर अलग होता है. इट डजंट मीन कि कोई अच्छा है और कोई बुरा है. सब अलग अलग आंसर देने वाला है. ऑफ कोर्स आंसर तो मैटर करते ही है, बट the way you answer, the way you react to someone's questions, the way you react to the grilling which is being done on you by the interviewing officer, आप उसको react कैसे करते हैं, yeah, it matters. ठीक है, of course the responses matter. Yeah, I cannot deny that कि responses matter नहीं करते. If the interviewing officer asks you कि आपके 12th में percentage कितना है, and you answer कि 40% है, तो yeah, it will project an image कि आप ध्यान नहीं देते थे पढ़ाई पे. But apart from that, if you're speaking it confidently and later part in the interview आप ये prove करते हैं कि आप guilty है उसके लिए, and since then you are improving on it, so I feel कि interviewer should be satisfied enough that he'll let go of that mistake. And what is the importance of communication skills, and basically what is the importance of English in interview? Okay, so communication skills, so I'll not communication सिर्फ इतना नहीं कि what is coming out of the mouth, not limited to the speech. Everything, your body language or your tone is very important. Okay, one can easily make out कब आप गुस्से में बात कर रहे हैं, कब आप डर के बात कर रहे हैं, और कब आप normally बात कर रहे हैं. तो tone is very important. और the way your body, तो आपका posture कैसा है. I remember once in my interview, my legs started shaking. Right leg started shaking. The interviewing officer immediately looked down and noticed it. So I'd say कि body posture बहुत ज़रूरी है. Body language is a form of communication skill. Of course, English तो ज़रूरी है ही. It is not कोई SSB में मैंने तो अब तक किसी को SSB में बोलते हुए नहीं सुना openly कि हाँ आप इंग्लिश हिंदी में बात करिए. English is the preferred language. आप गलती से एक बार अटक सकते हैं इंग्लिश बोलते हुए. हिंदी में एक आध सेंटेंस बोलने के बाद you must revert back to the English as soon as possible. So like I said, GTO में मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, नहीं चलेगा, और SSB में भी और कई जगह मुझको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए. अगर आप SSB जा रहे हैं तो वर्क ऑन योर इंग्लिश.
Okay. And what is the importance of current affairs and reading newspaper for interview and for the whole SSB process? ओके, सो करंट अफेयर तो बहुत शुरू से, आई मीन जर्नी के स्टार्ट से ही जरूरी है. अगर करंट अफेयर अच्छा होगा तभी आप पेपर क्लियर कर सकते हैं. सो इफ यू आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, सो वन कैन सी कि आप एक बेसलाइन तक आपका करंट अफेयर ऑलरेडी अच्छा है. बट जिस इंसान का करंट अफेयर अच्छा होता है, इट प्रोजेक्ट्स अ इमेज कि इसको अपने आसपास की दुनिया में इंटरेस्ट रहता है. सो टीवी सबके घर पे होती है, एंड इफ योर फादर और मदर इज लिसनिंग टू न्यूज और आप भी उनके साथ बैठ के देख रहे हैं, आपको भी जियो पॉलिटिकल इवेंट्स क्या हो रहे हैं, मिलिट्री अपडेट्स क्या है पता है, तो इट शोज कि आपको आपके आसपास ध्यान रहता है. घर में टीवी चल रहा था तो आप भी सुनते हो. बट अगर एक बहुत बेसिक सी, बहुत जो सबको पता है, ऐसा कोई फैक्ट पूछ लिया इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, तो इट विल प्रोजेक्ट इमेज कि आपको कोई लेना देना ही नहीं है दुनिया से. अगर ऐसा फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 370 के बारे में पूछ लिया, तो अगर आपने बोल दिया नहीं पता, तो इंटरव्यूअर को भी पता है कि इसके चारों तरफ ये था, ये चीज हर जगह थी, एफएम रेडियो में, टीवी में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में, पर इसने ध्यान नहीं दिया. सो नॉट नोइंग की थिंग्स इन द सोसाइटी विल इजीली सेंड आउट अ मैसेज कि यू आर नॉट अवेयर, आपको लेना देना नहीं है सराउंडिंग से. सो आई डोंट मीन टू से कि आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट मेजर इवेंट तो पता होने चाहिए. Okay, and like you attended SSB for first time only, and there you got recommended. So, did they Yes, ask you the questions regarding why didn't you join the NDA, and what was the reason for not yes, joining NDA? yes. So out of the 45 minutes my interview took place, I can easily say that 5 to 10 minutes were totally dedicated to the एनडीए पार्ट. व्हाई डिडंट आई क्लियर द एनडीए एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट प्लेस, और मुझे सीडीएस रिटर्न देने की क्यों जरूरत पड़ी. सो आई हैड माय रीजंस वेरी क्लियर and ready to speak in front of the interviewing officer. I told him that I was not good with mathematics, and even though I used to clear the GAT paper in NDA exam, I never cleared the maths exam. I did everything that was possible for me. I joined 2 coaching classes. I studied math syllabus 2-3 times, but something was going against me, or I was doing wrong. That was the reason I couldn't clear the NDA exam. एंड वो गलती को मैंने रिकॉग्नाइज किया और सीडीएस एग्जामिनेशन फर्स्ट गो में क्लियर किया. तो आई फेल्ट कि माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज satisfied with my answers. About the interview, I mean, there are a lot of questions which you have never heard of, and they ask you. Yes. So, what would be the best approach of a candidate to those questions? How he should answer those questions? सो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जो आपने कभी सुने नहीं है, उसमें as far as I feel, the interviewing officer is checking your reaction, first reaction, initial reaction, that's it. शायद ऐसे क्वेश्चंस में आपके आंसर्स मैटर भी नहीं करते, बट आपका जो रिस्पॉन्स है और आपका जो बॉडी के अंदर और स्पीच के अंदर जो चेंज आया, आपने कैसे रिएक्ट किया उस क्वेश्चन को, वही मैटर करता है. तो अगर कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, शायद उसका आंसर बहुत मैटर भी ना करे टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, बट आपने कैसे दिया और वो सुन के आपके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हुए, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो अगर कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ लेता है, फॉर एग्जांपल अगर आप तुम्हारे पेरेंट्स में से किसको ज्यादा पसंद करते हो, फादर को या मदर को, सो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन, राइट. वन कैन नॉट से या फादर या मदर. सो but still you can take that question, absorb it, take a deep breath, और कामली आप इसका आंसर कर सकते हैं. बट इसी की जगह पे आप आउट ऑफ अ सडन आप चौंक गए या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, तो दैट क्रिएट्स अ इंप्रेशन कि आप न्यू थिंग्स को या फिर आप प्रॉब्लम्स को एकदम शॉक हो जाते हैं. आप सडनली you get baffled by the things which are happening around you. Like there are many candidates who go to the interview and they didn't prepare it for, like they didn't go for that mock interviews and all. So is it the best Yeah. approach? I mean, not going to the preparation part and then going to interview. Okay. Among all the SSB preparations, one thing, सिर्फ एक चीज है जो मैं बहुत ओपनली एडवाइस करना चाहूंगी कि ये तो करनी ही चाहिए, एंड दैट इज मॉक इंटरव्यू. एवरीवन शुड अटेंड वन मॉक इंटरव्यू, जस्ट वन से ज्यादा की भी जरूरत नहीं है, जस्ट वन. तो आपको एक आइडिया आ जाएगा. क्या पता
आप एक वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, या फिर कोई इंडिया एस्पिरेंट है जो 12th के बाद सीधा जा रहा है, और तो उसने आज तक लाइफ में कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया, तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो एसएसबी जो एक इतना इम्पोर्टेंट लाइफ का ये है, वहां पे यू वुड नॉट लाइक टू गो अनप्रिपेयर्ड। सो अगर ऐसा कोई वर्किंग इंडिविजुअल है जो 24 ईयर ओल्ड है, जो अब तक अपने लाइफ में बहुत बार इंटरव्यूज जा चुका है, कंपनीज हो गया, कॉर्पोरेट इंटरव्यूज, आई डोंट थिंक कि उन्हें जरूरत है, बट समवन हु इज अ फ्रेशर मस्ट गो टू अ मॉक इंटरव्यू बिफोर गोइंग टू द एसएसबी। What is the importance of going to coaching institute for SSB preparation? I mean, even the interviewing officer also asks sometime that have you been to coaching Yeah. institute before the SSB? Yes. Even I was asked the same question that have you joined the coaching? So I told yes. You know, there are some pros and some cons too. One of the pros is that you get to know the SSB procedure very thoroughly. ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग नहीं गए तो आपको पता नहीं चलेगा एसएसबी क्या होता है, बट कोचिंग में जाके आपको एक परसेंट पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। सिर्फ वेगली फ्रेंड से सुन के या फिर वेबसाइट से पढ़ के जाने से अच्छा है, अगर आपको नहीं क्लैरिटी नहीं आ रही कि एसएसबी में क्या होने वाला है, तो आप एक बार जा सकते हैं, बट आपको एक बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी है कि मुझे एसएसबी के प्रोसेस के बारे में सब पता है, तो जाने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फील होता है कि एसएसबी में देयर आर सम टेस्ट जो मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहे, मुझसे नहीं जमने वाले खुद से, आई मीन व्हाट इज जीटीओ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट जीटीओ, सो मैं ये कैसे करूँ, और जो ब्लॉग्स में पढ़ रहा हूँ, जो वेबसाइट है, उससे भी हेल्प नहीं मिल रही, बिकॉज जीटीओ के लिए आपको फिजिकली ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ता है, और तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि आप मुझे कोचिंग जाना पड़ा। और मॉक इंटरव्यू के लिए मुझे कोचिंग जाना पड़ा। ऐसे सबके अपने अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं कि मैंने कोचिंग क्यों ज्वाइन की थी। और अगर कोचिंग आपके एक्सेसिबल है नहीं, या फिर जो भी उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, तो इट इज फाइन टू गो टू द एसएसबी विदाउट कोचिंग। And what was your experience in your first SSB from where you got recommended? Okay, so my experience was not a normal जो generally लोग SSB जाते हैं उनसे थोड़ा different था, because we went to the SSB during the lockdown. COVID was on its peak, so we gave our SSBs with face shields and masks and gloves all the time. So it obviously added one element of difficulty to everything. Every candidate was sweating while writing the psych test because of the face shields and the mask and hand gloves. So that is one different aspect of the SSB that was introduced to us. Apart from that, it is all the basic routine. Day one reporting, there were 31 candidates who reported, 15 were screened in, and I was the only one recommended from my batch. So psych test for me and for the other candidates, it went pretty well. In interviews, there were different opinions. Some were very tensed. कुछ लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, कुछ लोगों का इंटरव्यू काफी रफ गया। मेरा इंटरव्यू वन ऑफ द रफ इंटरव्यूज में से काउंट किया जा सकता है। देयर वर गुड पार्ट्स इन माय इंटरव्यू टू एंड रफ पार्ट्स टू, वेयर आई कुडंट आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस, एंड इन द जीटीओ वाज प्रीटी गुड फॉर मी। इतना गुड कि आई फील कि मेरी एसएसबी जो थी, इट स्टार्टेड टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स रिकमेंडेशन जीटीओ की वजह से। And at the last day conference, so the conference took place very early that day, and after the conference, they asked me few questions in the conference. My conference was roughly about 5 minutes long, and after then the tech officer came with the results, and he told me that only one candidate is recommended, and that is just number 2, and it was me. And after that, I was asked to get the documentation done. So, okay, Atul, tell us about the importance of hobbies and interest in interview, and what would be your suggestions to candidates? I mean, how they should approach their hobbies and interest, and is there any specific hobby that a person should have if he is preparing for SSB? Okay. So hobbies और interest से I'd say कि किसी भी human का जो एक different element of the behavior पता चलता है, ठीक है। Everyone should have hobbies and interest. अगर आपकी कोई hobbies और interest है नहीं, तो it clearly shows that you like to lie on the couch and sleep all day, because आपके पास free time होते हुए भी आप कुछ ऐसा नहीं करते जिससे आपको मजा आए, या फिर जिससे आपकी personality में कोई नया element add हो। So hobbies and interest is a must. At least for a defense aspirant, it is must. So
ऐसा कोई स्पेसिफिक हॉबीज या इंटरेस्ट नहीं है जो किसी डिफेंस एस्पिरेंट को होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम किसी को जज नहीं कर सकते कि किसी को स्केचिंग अच्छी लगती है तो वो अच्छा नहीं है, या फिर अगर कोई रॉक क्लाइंबिंग करता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा कैंडिडेट, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीवन कैन हैव देयर उनकी चॉइस की हॉबीज हो सकती है, बट फिर भी देर आर सम सेलेक्टेड हॉबीज, और कुछ कुछ हॉबीज है जो एक डिफेंस एस्पिरेंट को सूट करती है। तो आई वुड से कि साइकिलिंग, रनिंग, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं, आप एक्टिवली अपनी बॉडी को बिजी रखते हैं, तो वो आपके डिफेंस एस्पिरेंट वाली चीज से मैच करता है कि हाँ लगता है कि बिकॉज डिफेंस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी, ठीक है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कॉर्पोरेट सेक्टर के जैसे आपको बैठे नहीं रहना है टेबल पे। तो अगर आपकी हॉबीज इंक्लूड करती है माउंटेनियरिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, तो इट इज अ गुड थिंग। बट अगर नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू गेट रिकमेंडेड। There are a few questions that our viewers have asked, and we would like to ask you this question. One question is that is there any short strategy for preparation of CDS exam? I mean, there is another CDS OT exam in 2021 in the month of February. So, what would be the short strategy for that? So like I said in the earlier part of the video too, कि अगर आपके पास टाइम कम है 2 या फिर 3 महीने का, so straight away 3 सब्जेक्ट्स है, I mean 3 पेपर्स है, 3 बुक्स खरीदिए। फॉर मैथ्स RS अग्रवाल, फॉर इंग्लिश GD बख्शी की इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अरियंत पब्लिकेशन की, और GS के लिए ल्यूसेंट जनरल नॉलेज लेटेस्ट एडिशन। ये सारी बुक्स आपको एक एक बार करनी है और बहुत थरोली करनी है, लेकिन जीएस की बुक को आपको 2 या 3 बार करना चाहिए मिनिमम, ताकि आपको जीएस की चीजें याद रहे, अगर चाहे क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी है। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत अटेम्प्ट करने चाहिए, एटलीस्ट 10 to 15। बाकी इंग्लिश और जीएस के आप एक एक पेपर अटेम्प्ट करके आप इतना आइडिया भी ले लेते हैं कि एग्जाम कैसा होता है, तो भी काफी है। Okay, and there is one more question from one of our viewer, and he asked that if he, as he is in third year of his engineering, so when he should Yeah. start preparation for the SSB. For SSB, I'd say कि it is better the earlier you start, because the core qualities that they check in SSB can't be inculcated in one day. So the earlier you start for the SSB, the better it is. If you feel that you can go through the oil cues, and if you feel कि if you are lacking anywhere in any of the quality, okay, so let us suppose एक example ले लेता हूँ मैं, if you are lacking in stamina, okay, or courage, so you can start doing such hobbies जो आपकी इस problem को tackle करे. If you lack in stamina, you can start running, you can start cycling, or you can start swimming. और another OLQ, if अगर आपको ऐसा feel होता है कि if you lack in courage, go for treks, go for mountain climbing, वहाँ पे आपका courage check होगा. तो ऐसे आप हर OLQ को एक चेक बॉक्स के जैसे ट्रीट कर सकते हो कि हाँ ये क्वालिटी, इफ अगर ये मेरे पास क्वालिटी है तो इट्स ओके, और अगर नहीं होती तो व्हाट कैन आई डू टू इनकलकेट दैट क्वालिटी इन मी। तो इस सब प्रोसेस के लिए काफी टाइम लगेगा, तो अगर आपके पास टाइम है तो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। Okay, and is there any specific statement in which you believe, which gives you a lot of motivation? Like if I relate it with my story, so I'd say कि never back down from your struggle. If you're a hardcore defense aspirant, अगर आपको ऑफिसर बनना ही है, if you want to get in those olive greens, so you have to stay persistent, you have to stay resilient. If you have the behavior of backing off, अगर आपका एक बार पेपर क्लियर नहीं होता, आपकी एक बार एसएसबी क्लियर नहीं होती, and you're thinking if I'll revert back to my life or I'll leave, so it will create more difficulty for you, and it will show a picture कि आप in the first place आप ज्यादा interested थे ही नहीं, because आपने कुछ failures की वजह से तुरंत वो give up कर दिया. Of course a person should have a plan B as a career. आपके पास लाइफ में दूसरे भी चीज ऑप्शंस होने चाहिए, बट आप इतना भी लाइटली मत ले अपने ड्रीम को कि आप एक या दो बार फेल होते यू लीव इट. ओके, सो बी एक्सट्रीमली रेजिलिएंट, चाहे आपको एक दो या फिर कितने भी अटेम्प्ट्स लगे, स्टिक टू इट, वन डे यू विल अचीव इट. So one last thing is that what is your suggestions and guidance, and what is the motivation quote that you would like to tell to our candidates? The candidates who are facing failures, be it in SSB or be it in written examinations, for them I'll tell ki never back down, never give up. Okay, that is the only thing they need to inculcate in their life.
And to the candidates who are fresher, who will be going to the SSB for the first time, I'll always tell them कि be vigilant. अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को खोल के रखिए, अपने आसपास क्या हो रहा है, हर चीज को देखिए, and observe it, and only then go to the SSB. Okay, going to the SSB cluelessly is the biggest mistake a fresher can do, because fresher attempt is one of the golden opportunities, like everyone says. And a mistake a fresher can do is SSB वो ऐसे ही उठ के चला गया without any kind of observation. So for freshers, vigilancy is a characteristic every fresher should have. Even I had, while going to the SSB, I was very vigilant कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है मेरे सीनियर्स के साथ, क्या हुआ है ऐसे लोगों के साथ जो सिलेक्ट हुआ है, क्या हुआ है उनके साथ जो नहीं हुआ है. So vigilancy is important for freshers, and resiliency is important for the repeaters. Through the medium of your channel, I'd also like to say all the best to every aspirant out there. And don't worry, be stressless. Okay, don't take too much of stress. Believe in the process. One day you'll surely achieve it. All the best to everyone.